So, hello students, it's lecture 3. So, in it we see this photograph, figure 1.2, wood engraving of Louis Pasteur, watching Joseph Meister receive the rabies vaccine. So, it's a very historical picture in which we see that they are vaccinating Joseph Meister, the first person who is getting a rabies vaccine. It's a very momentous and historical event. So, so we see some more concepts related with these vaccines. That here we see that in 1977, the last known case of naturally acquired smallpox was seen in Somalia. This dreaded disease was eradicated by universal application of a vaccine similar to that used by Jenner in 1790s. So the first case, दुनिया में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि साइंस की मदद से, वैक्सीन्स की मदद से हमने एक बहुत ही डेडली डिजीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए और वो है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स को हमने 1977 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया कि उन्होंने इसको दुनिया से एरेडिकेट कर दिया। अब इसके बाद दुनिया में कोई भी सफ़र नहीं करेगा ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी में होता है कि कुछ लोगों को, फॉर एग्जांपल 60-70% लोगों को अगर वैक्सीनेशन मिल गई है तो इसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाएगा और फिर बाकी लोग अगर थोड़े से ऐसे हैं जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उन्हें भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्हें डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास द क्रिटिकल मास ऑफ पीपल acquire protective immunity either through vaccination or infection. They can serve as a buffer for the rest. This principle is called herd immunity. It works by decreasing the number of individuals who can harbor and spread an infectious agent, significantly decreasing the chances that susceptible individuals will become infected. This presents an important altruistic consideration. तो हार्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छा है हमारे पास कंसेप्ट, जिसकी वजह से डिजीज का स्प्रेड रुक जाता है। तो हेयर वी सी another thing, they are in this table, you can see that they are writing this, that we have smallpox and diphtheria, rubella or measles, mumps, pertussis, पैरालिटिक, पोलियो, रिबेला, टेटनस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है स्मॉल पॉक्स जो है उसकी प्रेवेलेंस जो है वो कितनी थी, और पोस्ट वैक्सीन हमारे पास प्रेवेलेंस 0 हो गई और कंट्रोल जो है और रिडक्शन 100% हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास डिप्थीरिया जो है उसके कितने केसेस थे और पोस्ट वैक्सीन एरा में केसेस 0 हो गए और उसको कंट्रोल करना जो है 100% चांसेस हो गए। इस तरह म्यूजिल्स जो है उसके हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा केसेस थे और पोस्ट वैक्सीन में हमारे पास लाखों से कम होकर सिर्फ 26 रह गए और 99.99% कंट्रोल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक यूज़फुल और कितना बड़ी एक खिदमत है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी है, जिसमें इन बड़ी बड़ी डिजीज़ को कंट्रोल किया गया और उनके जो प्रिवेलेंस है वो 0 और नियर टू 0 हो गया है और जो रिडक्शन है वो 80%, 90%, 98, 100% तक पहुंच गया। सो इट्स अ वेरी गुड एंड बिग अचीवमेंट। तो तो इम्यूनोलॉजी ये नहीं है कि इम्यूनोलॉजी इज अबाउट मोर देन जस्ट वैक्सीन।
and infectious diseases. In immunology में बहुत कुछ है. It's not just these vaccines and infectious diseases. There can be some other solutions. So here we can see some important names who got Nobel Prize. For example, in 1901, Emil von Behring got this serum antitoxin. He worked on serum antitoxin and he got Nobel Prize for his contributions in 1901. And Robert Koch has worked on cellular immunity to tuberculosis and he got Nobel Prize in 1905 and he belonged to Germany. Eli Mechnikov belonged to Russia and Germany and he worked on this role of phagocytosis and antitoxins in immunity and he got Nobel Prize in 1908. Another important name is that of Karl Landsteiner. He discovered human blood groups. In 1930, he got Nobel Prize. Daniel Bovet, he belonged to Switzerland and he worked on antihistamines and allergies and he made some medicines of, for treatment of allergy and in 1957 he got Nobel Prize. Just like this we have some other names, Porter and Edelman. They worked on the structure of antibodies and they belonged to Great Britain and United States and they got Nobel Prize in 1972. Just like this we have in 1970s this development of radioimmunase by Rosalind Jallo, and in 1984 we see that this Neil Journey and Kaiser Milstein and Kohler, they were successful in production of monoclonal antibodies and Donnell and Thomas and Joseph Murray, they worked on transplantation immunology. So these are the very important names in the developments related with immunology and they got Nobel Prize for their contributions. So this immunity involves both humoral and cellular components. So another concept is that immunity involves this both humoral and cellular components. It means that this Emil von Behring showed that this liquid part of the blood without cells, blood part have these antibodies which and that is termed as humoral immunity which help in the immunity and there's Eli Mitnikov worked on cell mediated immunity and so there are two major concepts that is humoral immunity and cellular immunity. So both are right, both have these experimental standings and they are proven, so therefore both concepts are the right one, that is humoral immunity and cell mediated immunity.